You should really bring the Knights of Favonius with you next time. I still have a lot to do with the guild. How about you take a rest while I go back? Guess we can rest a bit. ये तो ज़रूर करेंगे नीलू टेस्ट रन. नीलू देखे तो सही. ओके 50,000 मैक्स HP. वेपन्स की ऑफ खाज निश्चित. अच्छा ये सोर्ड है, मुझे क्लेमोर लग रही थी. एनीवेज पता है मुझे इसका. Artifacts, tenacity of the millith, constellation, talent. Okay, normal attack. Performs up to 3 consecutive sword strikes. Consumes a certain amount of stamina to perform a twirling slash. Plunges from mid-air. हाँ ये तो पता है. Dance of the Hafkarswar. Enters the pirouette state, dealing hydro damage to nearby opponents based on Nilu's max HP. While she is in the pirouette state, Nilu's normal attack and elemental skill will cause her to enter the sword dance. And whirling steps instance respectively, causing damage she deals to be converted to hydro damage that cannot be overridden, and that is considered elemental skill damage. Okay. In these stance, Nilu's third dance step will end pirouette and has the following effects based on the type of said dance step. Sword dance. Unleashes a luminous illusion that deals hydro damage to opponents it touches and grants Nilu the lunar prayer effect. This effect converts Nilu's normal attacks into sword dance techniques. It touches and grants Nilu the lunar prayer effect. This effect converts Nilu's normal attacks into sword dance techniques, and her final hit will unleash a luminous illusion. Whirling steps. Nilu unleashes a whirling water wheel that deals AoE hydro damage and creates a tranquility aura that follows your active character around.
and applies wet to opponent within its AoE range. Nilu is unable to perform charged attacks when under the effects of Pirouette or Lunar Prayer. Nilu is unable to perform charged attacks while under the effects of Pirouette or Lunar Prayer. These effects will be removed once she leaves the field. 1 minute. So, okay. Dance of Abzindagi. Distant dreams, listening springs. Begins the dance of faraway dreams and springs that hear, causing a lotus of distant waters to bloom, dealing AoE hydro damage based on Nilu's max HP and applying the lingering Aeon effect to all its opponents hit. After an interval, opponents affected by lingering Aeon will take hydro damage. Okay. कॉले का भी देख लेते हैं. Throws out a floral ring that deals 1 instance of dendro damage to targets it comes into contact with. The floral ring will return after a set time, dealing dendro damage once again. Okay, Trumpet. It throws a tall named Kulian Amber, causing an explosion that deals AoE dendro damage, creating an Kulian Amber. Okay, basically dendro damage ही burning can aggravate spread bloom, hyper bloom or Persian. अच्छा बारबरा है. Ready, steady, go! Dance with the waves! Die. Forever, help! Here! I'll protect you! All eyes on me! Positions! यार ये तो नेटला ने बहुत काम आएगी बंदी. Just like we rehearsed! Ready, steady, go! Let's dance! Here! This dance is for you! वो यार मैं हमेशा से हाइड्रो कैरेक्टर चाहता था क्योंकि आगे फाउंटेन आएगा, नेटलैन आएगा जो कि पायरो नेशंस है, वहाँ पे ये बहुत काम आने वाली है. ये तो अभी भी बहुत काम की चीज़ है यार. और मैं पेटी पे नहीं हूँ. मेरे सारे जेम्स ना प्रीमो जेम्स बेकार चले जाएंगे अगर मैंने इसके लिए पुल किया और ये नहीं मिली तो. पर इसके ऊपर टेनासिटी ऑफ द मिलिथ क्यों है? कुछ ऐसा होना चाहिए जो एलिमेंटल डैमेज को बढ़ाए, एचपी वाली. Nice and spicy! This! Witness my great undertaking! Burst forth! Moments of birth!
Come into being! Bedo. Bedo Albedo. Freeze! Dodge this! You haven't won yet. Cool it! Oh, so sorry. Power the ended Archon. Dodge this! This moment will be frozen! Eyes on me. Cool it!
You should really bring the Knights of Favonius with you next time. There are so many local specialties in Sumeru. I want to buy more. Don't you remember your adventure plans, my lady? Ad Astra Abyssask. Ad Astra Abyssask. We meet again, you two. Hi, Catherine. Do you have any commissions for us today? Yeah. Commissions, huh? Let me think. Oh, how about this? Please attend the Academia's Academic Symposium this afternoon and recite a love poem on stage. Wait, say what now? And if possible, please also use your camera to capture the reaction of the audience upon finishing the poem. Huh? What kind of commission is that? I see. It appears that you're not in that case, please go to Port Armos and convince the Eremites there to spend some time volunteering at the local orphanage. Hey, that's not any better. I'm sure the mercenaries will have some interesting reactions as well. Paimon's gotta ask. Just who exactly has been submitting these commissions to the Adventurers Guild? Oh, the commissioner? Well, actually, I just wanted to see the two of you in action. Oh. Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to observe humans doesn't come by often. Ah, so it's Nahida. Paimon just knew Catherine wouldn't crack those kinds of jokes. When did you get into her head? From when she said, Ad Astra Abyssask. So it's been you this whole time? Are you done resting up, Nahida? Yes. I've been sleeping ever since we parted ways, and I even had a really, really long dream. It was another dream about the Sub-Zerus Festival, except it was a happy one. In my dream, I was sitting in the middle of a flower terrace, and everyone in Sumeru City was holding hands as they danced in circles around me. They danced round and round, and everyone looked really happy. I also got to sit on a gigantic flower carriage. Fairs, the Night of Flowers, raised me really, really high above the ground, and I was throwing an endless amount of Yalda candies at the children.
You know, Nahida, maybe your dream is how the Sumeru's festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets together to celebrate your birthday. Huh? Wasn't I describing a really happy dream? Why are you both looking at me like that? No! We aren't pitying you. That would only make everything worse. We just don't want you to feel too sad. By the way, have you had a chance to visit Dunyarzad? How's she doing? The Homiyanis haven't allowed any visitors after the festival, so we haven't been able to check on her. Yes, I paid her a visit right after I woke up. She was resting at the time. That's good. Her condition is stabilized. However, since Elazar is a manifestation of the withering on the human body, we can only cure it by finding a way to take care of Irminsul's own withering. तो मतलब कि इसका इलाज है. Okay, that gives me hope. इलाज है तो अच्छी बात But है. for the moment, our top focus should still be figuring out what the sages are up to and what they're planning. Yes. Right. Who knows what'll happen if they manage to pull off another scheme like the Samsara of the Sub-Zero's festival. Yeah. So our first priority should be investigating and putting a stop to the sages' activities. As for how we should pull that off, let's discuss it somewhere else. There are too many adventurers around here. Oh, good point. Sorry adventurers. We're gonna be borrowing Catherine for a little while. कैथरीन को लेने की क्या जरूरत है? खुद भी तो जा सकती है. बेचारी कैथरीन को पोजेस कर रखा है फालतू में. ड्रीम्स एम्प्टीनेस डिसेप्शन. ओके. किधर जाने का है? हाँ. ऊपर से नीचे आ गए. Let's continue our chat here. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. I've already tried that, but all the key members of the Academia, even the core 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. It seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks from the Akasha. Of course, it could also be because they're wary of me. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet. But distrusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. In any case, I probably can't take over their minds directly. You're an Archon. We're in the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to terrible consequences. After all, every person in Sumeru City is one of their hostages. No way, that's too risky. You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely ruin their lives. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? That's a good point. Spoken like the god of Sumeru. Are we really out of ideas? Nahida, you're super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already. According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us take your ideas seriously. Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't get ordinary people involved, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the sages. You're saying we should recruit a spy? That does sound like it could work. Oh, before coming back, we met someone named Al-Haytham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the Academia's back. They probably aren't in cahoots. Yes. Actually, I already have someone in mind. Do you still remember that female scholar named Sataria? Sataria? Paimon remembers now. Isn't she the one who's
always trailing behind the Grand Sage of the Academia? We ran into her basically every time the Sumeru's festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilu. I've always liked observing all kinds of people, and Setaria has always stood out from the crowd. She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission into the academia, and also gave her the opportunity to serve as the sage's assistant. बट होपफुली अभी मैं 2-3 दिन के अंदर कैचअप कर ही लूँगा यार इन सब से ना. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. The name Setaria means star. When she lived in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. Later on, she was chosen by the sun. The star was given a place in the daytime sky to complement the sun's dazzling light. Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth, which brought forth many disasters. The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ डेजर्ट एरिया के लिए. मैंने इसलिए बहुत टाइम से ना यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो भी नहीं देखी, नहीं तो फिर मेरा ना स्पॉइल हो जाता आगे का. पर एक आध आप अवॉइड भी नहीं कर सकते ना, शॉर्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ नज़र आता ही रहता है. पर फिर भी मैंने काफ़ी खुद को बचा के रखा है स्पॉयलर्स से. From the sound of it, Setaria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just running away from her problems. Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't be fixed anymore. She's suppressing a lot of guilt. But before she realized it, she had already become the sage's accomplice. She can't deny her part in their schemes anymore. Right. We must somehow make her face her problems again. That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself. From my past observations, Setaria will take a day off from the academia every 10 days to do some shopping in the city. Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for her. That'll be our chance to prepare. Let's go check out some of her favorite spots and have a quick chat with a few of the vendors there. अब हम possess करने वाले हैं. This should be Setaria's favorite fortune-telling spot. लोगों के favorite fortune telling spot भी होते हैं. So should we ask the fortune teller about Setaria? No, I already have enough information on Setaria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Talking style and key characteristics? My poor lost lambs. Have you become troubled over your fates? The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. If thou be blessed today by the gods, why no views? You have good to streams. Show you the way. पर अब आप आ गए हो ना यार, आप देखो. Sidalin. Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? मैंने बीच में स्ट्रीम करना बंद कर दिया था यार, घर और भी कुछ घर के कुछ कामों में अटका हुआ था. पर अब मुझे टाइम लगा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली स्ट्रीम करने का. एटलीस्ट 2 घंटा तो डेली में स्ट्रीम करूँ. सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट. लेट्स सी how successful I am, you know. Shh. My friend here has some doubts regarding his future. Can we get a fortune reading for him? Of course. In that case... Notification नहीं आता है तुम्हारा. तो यार नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से आपने ऑन करना होगा ना आपको. नोटिफिकेशन ऑन करके देखो. सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके देखो. आना तो चाहिए यार उस केस में, पता नहीं. Mic, video quality, webcam and all. Thank you.
माइक जो है एक्चुअली, हाँ माइक तो मैंने बहुत पहले लिया हुआ था। ये मैंने ऐसे ही ले लिया था जब मैंने कभी स्ट्रीमिंग का सोचा भी नहीं था, मैंने तभी ले लिया था माइक। और जो वेब कैम है वो एक्चुअली मेरा DSLR कैमरा है, नाइकॉन का Z6 II। बाय द वे मैं बाय प्रोफेशन एक फ़ोटोग्राफर हूँ, तो कैमरों की मेरे पास कोई कमी नहीं है। और लाइट्स भी मेरे पास, क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफर हूँ तो लाइट्स भी मेरे पास रखी हुई हैं। ओके, ऑफ कोर्स इन दैट केस म्याऊ। It would seem that Harut and Marut are quite On है। wary of you. ए फेलो फोटोग्राफर, अरे at आर यू some फोटोग्राफर time इज in the वेल? past, सही है यार। You have somehow offended the gods. यश ऑन है, पता नहीं यार, ऑन है तो आना तो चाहिए, आ क्यों नहीं रहा पता नहीं। हो सकता है क्या कहते हैं यूट्यूब के साथ कुछ हो इशू की वो छोटे चैनल्स की नोटिफिकेशन ऐसे नहीं भेजता हो। आप ऑन रखो, हो सकता है धीरे धीरे आ ही जाए। यूजुअली मैं डेली इसी टाइम स्ट्रीम करता हूँ, 1 से 1:30 बजे या 1 से 2 के बीच में मैं ऑनलाइन होता हूँ, और शाम को 4 बजे तक मैं करता हूँ। अभी बीच में थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा मिलेगा तो मैं और थोड़ी लंबी स्ट्रीम करूँगा। और दूसरी चीज़ ये, मैं अपने लैपटॉप से स्ट्रीम करता हूँ, तो लैपटॉप की स्ट्रीम ना ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती। लैपटॉप गर्म हो जाता है ना तो स्ट्रीम की क्वालिटी में इशू आना शुरू हो जाता है। Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? How long have you been playing Genshin? I have been playing Genshin for a year and a half, पर बीच में मैंने 6-7 महीने नहीं खेली थी, रुक गया था, तभी मेरी इतना पीछे चल रहा है। वरना मैं बिल्कुल अप टू डेट था, जितनी भी क्वेस्ट है मैं सब पे अप टू डेट था। मैं अपने डेली कमीशंस भी कर रहा था और डोमेन्स वगैरह सब चल रहे थे। 6 महीने नहीं खेला और इतना पीछे हो गया, मैं क्या बताऊँ। Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. डिवाइन माई प्रॉस्पेक्ट इन हेल्थ, डिवाइन माई प्रॉस्पेक्ट इन लव। लव का मैं क्या ही करूँगा यार, मुझे तो अपनी बहन को ढूंढना है यहाँ पे। Health prospects. No problem at all. After cutscene, show us your builds and character collection. Sure. The gods have spoken. The truth shall be revealed. By the way, मैं F2P प्लेयर हूँ, प्योर F2P प्लेयर नहीं हूँ। मैंने 2 बार, जब मैंने स्टार्ट किया था गेंशिन खेलना, तब मैंने 2 बार वेल्कन मून लिया था बैक टू बैक। उसके बाद से नहीं लिया कुछ भी, ना मैंने कुछ गेम में पे किया है। तो जो भी मेरे पास है सब फ्री टू प्ले है। Your life shall continue on for many tens of thousands of years. Harut, Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. Absurd नहीं, बिल्लियाँ ज़्यादा समझदार हैं, हारूत और मारूत। Yes, nice cat. Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is suboptimal. As such, there will be no charge. Traveler is obviously immortal. यार मैं काफ़ी ज़्यादा घुसा हुआ हूँ गेंशिन की लोर के अंदर। मैं बहुत सारे लोर वाले जो यूट्यूबर्स हैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, धीरे धीरे देखता रहता हूँ। तो अभी तक तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इसका भी कुछ चक्कर तो है ट्रैवलर का। एक्चुअली गेंशिन की स्टोरी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। Is that so? Well, that can't be helped. If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels of fate. Okay. बिल्लियों के लिए खाना लेकर आना है। अच्छा नहीं, अब किसी और के पास जाना है। अच्छा मेरे बिल्ड्स, तो यार मेरी बिल्ड जो हैं, जो मेरे पास कैरेक्टर्स हैं, तो मेरे जो मेन 4 कैरेक्टर हैं, जो मेरी कोर टीम है, वो है रेजर, रोजारिया, डीलुक और डायोना। डायोना हीलिंग और शील्ड्स के लिए, रोजारिया और रेजर फिजिकल डैमेज के लिए, और डीलुक प्योर DPS के लिए, है ना। जो मेरे पास कॉन्स्टलेशन से ज़्यादा वो रोजारिया के हैं, C5, रेजर मेरा C4 है, डीलुक C0 है, डायोना C3 है। उसके अलावा जो मेरे पास सबसे ज़्यादा कॉन्स्टलेशन ऑन है वो सुक्रोस के हैं। अब मेरे पास वो नहीं है यार, वेंटी। सो मेरे पास वेंटी नहीं है, तो वेंटी के अलावा मुझे लग रहा है अगर मैं एनिमो का कोई कैरेक्टर बनाऊंगा तो मैं सुक्रोस को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी C6 है।
ठीक है, बाकी तो फिर ठीक है। बेनेट है C3 पे, C0 निंगवांग, काया, योइमिया, फिशल, लीसा C1, शिंगचो C3, बारबरा C1, शिनयान C1, एम्बर C2, चीची C0, राइडन C0, कोकोमी C0, नोएल, सायू C4, बेडो C1, इसका भी एक और मिला है मुझे। शिनयान C1, एलॉय तो सबको प्रसाद में मिली थी, हुताओ C0, कुकीशिनोबु C0, कॉले C0 और यानफे C0। तो ये मेरे कैरेक्टर्स हैं। हम तो नूब हैं। यार ये गेम में इतना ना मैं बताता हूँ, इस गेम के अंदर ना प्रो और नूब जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जिसने 2 साल तक ये गेम खेली है, 1.5 साल 2 साल जो भी है, उसकी स्किल्स और जिसने 1 या 1.5 साल खेली उसकी स्किल्स ऑलमोस्ट बराबर हो जाती हैं, ठीक है। बाकी इसमें सारा खेल पैसा डालने का है। तुम पैसा डालोगे तुम्हारा डैमेज बढ़ जाएगा, उसमें प्रो और नूब वाली कोई बात ही नहीं है। तुम पैसा डालो, अच्छा प्रीमियम्स खरीदो, कॉन्स्टलेशन अनलॉक करो, लेजेंडरी कैरेक्टर्स की, देखो कैसे डैमेज ऊपर जाता है तुम्हारा। Yep, it belongs to a king. His father helped Satari a lot when she first moved to Sumeru City, so she still comes by whenever she has time. फ्री टू प्ले होते हुए मेरा 6 लाख से ऊपर किया। हाँ ऑफ कोर्स, देखो मैं मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि फ्री टू प्ले का नहीं जाता। आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपको डोमेन में बहुत अच्छे आर्टिफैक्ट्स मिल गए, ठीक है। अब जैसे कि मेरा अभी मैं दिखाता, मेरा जो रेज़र है, रेज़र के पास वुल्फ ग्रेवस्टोन है जो कि बहुत ही बढ़िया क्लेमोर मानी जाती है, ठीक है। अब अगर मेरे को रेज़र के वो भी अच्छे मिल जाए आर्टिफैक्ट, सारे बढ़िया आर्टिफैक्ट मिल गए, है ना, और एक कॉन्स्टलेशन और ऑन हो जाए, इसकी रिफाइनमेंट रैंक जो है वुल्फ ग्रेवस्टोन का एक और ऑन हो जाए, और साथ साथ मुझे रेज़र C6 मिल जाए, फिर देखो कैसे डैमेज ऊपर जाता है। डी लुक के मेरे 2 कॉन्स्टलेशन और खुल जाए, सब किस्मत वाली बात है। इस गेम में तो वैसे भी किस्मत वाली बात है। लोग अपने घिसते रहते हैं इसके अंदर और उनको आर्टिफैक्ट्स अच्छे नहीं मिलते। मेरा भी देखना आईडी कट सीन के बाद, नेवर रिफाइन 5 स्टार वेपन। क्यों यार, देखो अगर आ रहा है, जैसे कि मैं पे नहीं कर रहा, अगर मुझे एक वुल्फ ग्रेवस्टोन और मिल जाती है ना, तो मैं अब उस वुल्फ ग्रेवस्टोन को क्या करूँगा। हाँ ये भी कर सकता हूँ कि मैं किसी दूसरे कैरेक्टर को पकड़ा दूँ जो क्लेमोर कैरेक्टर है ना, लेकिन अगर मेरा फोकस सिर्फ 4 कैरेक्टर्स के ऊपर है जिसमें सिर्फ एक ही क्लेमोर है, तो मैं उसको रिफाइन कर दूंगा, उससे ज़्यादा क्या करना है। When I start talking with him, listen carefully to the details of our conversation. Ah, dear customers, would you like to look at some pottery? If you get another wolf gravestone, give to D-Luke. हाँ वही मैंने कहा ना कि आप चाहे तो रिफाइन कर लो या फिर किसी और कैरेक्टर को दे दो। मैं वुल्फ ग्रेवस्टोन को D-Luke पे यूज़ करना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि रेज़र इससे हम ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा पाएगा, क्योंकि रेज़र के कॉन्स्टलेशन ज़्यादा खुले हुए हैं और रेज़र के पास D-Luke से थोड़े से बेटर आर्टिफैक्ट्स हैं जो मेरा रेज़र है। यू कुड हैव यूज इट कैरेक्टर्स लाइक D-Luke। हाँ, रिफाइन इज़ डन बाय हाई स्पेंडर्स। हाँ वो भी है। We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business. Yeah. Speaking of, where did you learn this trade? D-Luke C0 outperforms C6 Razor. आउटपरफॉर्म तो मैं नहीं कहूँगा, अगर आपके पास दोनों के बराबर इक्वली गुड आर्टिफैक्ट्स हैं, है ना, तो रेज़र का डैमेज बहुत ही इंसेन है। कभी रेज़र का डैमेज देखना है, एक C6 रेज़र जिसके पास वुल्फ्स ग्रेवस्टोन है ना, और उसको आर्टिफैक्ट अच्छे मिले हुए हैं, हिज डैमेज इज़ इंसेन। लेकिन D-Luke जो है ही इज़ मोर फन टू यूज़। ऑब्वियसली यार, एक 4 स्टार कैरेक्टर 5 स्टार कैरेक्टर में अगर डिफरेंस ही नहीं होगा तो लोग 5 स्टार क्यों लेंगे, या लेंगे से मतलब कि उसको यूज़ क्यों करेंगे। तो डिफरेंस तो है, बट अगर आप बिल्ड अच्छा कर रहे हो, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, एम्बर का डैमेज इतना योएमिया से ज़्यादा, मतलब एक बंदा है जिसने पूरी की पूरी गेम सिर्फ एम्बर पे खेली हुई है, सोचो। I suppose you could say it all started with my dad.
He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. After that, I began making pottery by myself in secret, and I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. That's nice. You're making a living doing something you love. My Razor C6 with Wolf Gravestone with talent 10-10-9 gives 20k only with godly artifacts. कौन से आर्टिफैक्ट हैं? मैं भी चेक करता हूँ, ये कट सीन हो जाएगा ना, फिर मैं देखता हूँ आपकी प्रोफाइल. So is your father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care now. No problem. Rest easy. All our goods are sure to meet your every need. हेयर स्टाइल तो इसका वीड़ा जैसा है. 2 पीस ब्लड स्टेन, 2 पीस पेल फ्लेम. मेरे रेजर के पास जो है पेल फ्लेम 4 सेट है, क्योंकि मैंने इसको वो किया हुआ है. HP क्रिट डैमेज, अटैक क्रिट डैमेज, ये ज़्यादा बेटर नहीं है. अटैक क्रिट रेट, सिर्फ एक ही इकलौता मुझे ये अच्छा क्या कहते हैं मिला था आर्टिफैक्ट, पर ये भी सारा मोस्टली क्रिट डैमेज पे चला गया, बट दैट्स ओके. और ये डी लुक को मैंने ये इसलिए दी हुई है, डी लुक को मैंने सर्पेंट स्पाइन इसलिए दी हुई है कि सर्पेंट स्पाइन में क्रिट रेट है, सिर्फ इसी वजह से इसके पास सर्पेंट स्पाइन है. इसी वजह से मेरा जो क्या कहते हैं क्रिट रेट, ओह सॉरी, 59-153 है. आर यू कलेक्टिंग मेल एंड इवेंट्स? हाँ, मैं कलेक्ट करता हूँ. 59 ऑलमोस्ट 60 क्रिट रेट एंड क्रिट डैमेज 153 डी लुक का. अब डी लुक को मेरे अगर वो अच्छे मिल जाए, आर्टिफैक्ट्स और अच्छे मिल जाए. क्रिम्सन विच 4 सेट है, लेकिन आर्टिफैक्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है. ये फिर भी ठीक है. इसमें क्रिट रेट अगर बढ़ता तो ज़्यादा अच्छा होता है. इसमें सारा HP बढ़ गया. क्रिट डैमेज, HP, क्रिट डैमेज, क्रिट रेट, पायरो डैमेज बोनस है और क्रिट डैमेज का हैट है इसमें, लेकिन कहीं पर भी नीचे क्रिट रेट या ऐसा कुछ नहीं है. 808003843. अच्छा, मैं देखता हूँ. इन गेम के बजाय कोई बाहर की वेबसाइट है जहाँ पर ये आईडी डाल के मैं चेक कर सकूँ प्रोफाइल, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर चेक करूँगा ना तो जो सारे मुझे नहीं दिखाएगा जितने भी क्या कहते हैं कैरेक्टर्स हैं. पर चलो फिर भी यहीं पे जो एक बार डाल के देखता हूँ. 80803 दो साइड्स है प्रिटी सस. हाँ, हो सकता है. ओके, सेड AR-59 कहाँ गया डीलो. C1 वुल्फ, क्रिम्सन विच ऑफ फ्लेम्स में. एक मिनट, क्या है? 2626 ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है ये वाला, लेकिन आर्टिफैक्ट देखता हूँ. ओके, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, हाँ ये अच्छा है. क्रिट डैमेज हैट विथ क्रिट रेट, पायरो डैमेज बोनस विथ क्रिट रेट. हाँ, ये चाहिए मुझे यार. हाँ, ये चाहिए मुझे. पायरो डैमेज गॉबलेट चाहिए जिसमें क्रिट रेट और क्रिट डैमेज हो. अटैक, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज. हाँ, तो ये ऐसा मिल जाए ठीक है. अब इसमें क्या कहते हैं तुम्हारे अगर C2, यार तुम्हारा डीलुक भी तो C2 है ना, और तुमने ऊपर कहीं बोला डीलुक C0 परफॉर्म्स. अच्छा, यू डिडंट से डीलुक माई डीलुक इज C2. अच्छा, मैं समझ गया. OG राशु, हेलो ब्रदर, हाउ आर यू, वेलकम टू द स्ट्रीम. तो ये जो है क्या कहते हैं तुम्हारा C2 डीलुक है. ऑब्वियसली यार तुम्हारा तो डैमेज अच्छा होगा ही होगा. साइनो
आ रहा ताकि आया का बढ़िया है। गान्यू शाओ ओपी। एक मिनट, इसमें अगर मैं देखूं, एक मिनट, कॉन्स्टलेशन पहला C1 है। डीलुक डील्स 15% मोर डैमेज टू ओपोनेंट्स हुज HP इज अबव 50%, और व्हेन डीलुक टेक्स डैमेज ही अटैक इज इंक्रीज बाय 10%। तो यार C2 अगर ऑन हो जाए तो फिर तो क्या ही बात ही क्या है। बाकी भी देखो, राइडन कॉन्स्टलेशन। अच्छा एक सेकेंड, क्या था? 808 003 843 राइडन। यार C2 राइडन, बड़े बड़े लोग यहाँ पे। एम्बलम ऑफ सेवर्ड फेट, ओके। क्रिट रेट सर्कुलेट विद क्रिट डैमेज, ब्रो क्या बात है। इलेक्ट्रो डैमेज बोनस विद क्रिट डैमेज, एनर्जी रिचार्ज विद क्रिट रेट क्रिट डैमेज विद अटैक क्रिट डैमेज 27। क्या बात है। 3 राइडन्स इन 40 पुल्स। भाई साहब, मैं तो ज़्यादा पुल कर ही नहीं पाता। मैं इनफैक्ट अभी भी मैंने क्या कहते हैं, मुझे कुछ फ्री प्रीमोजेम्स मिले थे। प्रीमोजेम्स कह रहा हूँ, कुछ इंटरट्वाइंड फेट मिले, तो मैंने पुल किया था। मुझे लगा कि जो अभी नई कैरेक्टर आई है ये वाली, क्या नाम है इसका, नीलू, तो मैंने सोचा था इसको थोड़ा पुल करते, क्योंकि मुझे इसका डैमेज काफ़ी अच्छा लगा था। और जो घटिया आर्टिफैक्ट आते हैं ना HP वाले या डिफेंस वाले, HP वाले स्पेशली इसके ऊपर ज़्यादा बेटर थे। तो मैंने पुल किया, मुझे मिला नहीं है। 1305 प्रीमोजेम्स हैं, मैं अभी ज़्यादा ना पुल कर नहीं रहा। शॉप से ले लिया, हाँ शॉप से ले लिया, शॉप से ही लिया। वही इंटरट्वाइंड फेट्स की बात कर रहा हूँ। नीलू इज़ नॉट गुड, लेकिन उसका डैमेज बहुत अच्छा है नीलू का, और उसका डैमेज उसके HP पे क्या कहते हैं स्केल हो रहा है। तुम समझ रहे हो? इतने सारे आर्टिफैक्ट मेरे पास HP के पड़े हुए हैं, हेल्थ के, उसमें कोई क्रिट रेट क्रिट डैमेज वाला मिल जाए तो क्या ही बात है। एनीवेज, अब आगे कहाँ जाना है? ट्रायल वाले मत देखा करो। हाँ मुझे पता है, ट्रायल के ऊपर वहाँ पे सब कुछ परफेक्ट This लगा should be होता our है। final stop. Sitaria's always thinking of this restaurant when she's working at the academia, so she always comes by whenever she's out in the city. They give her best artifacts and too much energy. अच्छा, नहीं मैं उसका एनर्जी रिचार्ज को देख ही नहीं रहा। जितनी स्पीड से उसकी E और उसका Q रिचार्ज हो रहा है ना, मैं उधर ध्यान नहीं दे रहा। मेरा सारा ध्यान सिर्फ इस पर रहता है कि अगर जो आर्टिफैक्ट उन्होंने दिए उसे दिए हैं, वही आर्टिफैक्ट मुझे मिल जाए तो मेरा भी तो डैमेज उतना ही जाएगा ना फिर। Nahida, you've really thought of everything. It's my duty to protect Sumeru's citizens, after all. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. अभी कैथरीन की आवाज़ में आ गई। Sorry, I don't quite remember. If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Ah, that's right. I've always been really interested in feats of marine engineering. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but failed to make it into the academia due to my lack of talent. But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars, and I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get to the academia after their next round of exams. What an admirable spirit for learning. Amazing. Sure, but you'll find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. I see. Yes, that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. Thank you so much. As long as I can make it into the academia as an official student, I'll be happy. Okay, talk to Nahida now. कहाँ गई Nahida? So, was that everybody?
Mm-hmm. 3 familiar faces should be enough for Setaria. What's the point of all the information we've collected? Setaria is already used to avoiding her problems. So I remember that you mentioned that the Eremites in Port Ormos are all making a fuss about the upcoming resurrection of the Scarlet King. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Setaria's soft spot. Oh, Paimon gets it now! You want to take advantage of the guilt Setaria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. So, how do we set that up? यार जरा भूख सी लग रही है. Sorry. Well, the Scarlet King is long gone, and Setaria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of the Scarlet King's believers, she would definitely be wary of us, and we may not get anywhere. Okay. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different. नाहिदा नूब है. स्पॉइलर, नाहिदा जोंगली और राइडन की बेटी है. एक येलो, दूसरी ब्लू, उनकी बेटी ग्रीन. So, you mean you're going to possess those people we just talked to? हाँ भाई पता है. लेकिन जो बात मैंने बोली ना, राइडन और जोंगली की बेटी है, रेडिट वाले पागल हो जाएंगे उनकी वीडियो बना बना के. कैम 60 FPS है. हाँ ब्रो, ये DSLR है मेरा. DSLR में मिररलेस कैमरा है मेरा. Yep. Possess them through the Akasha. Imply that they've already converted to the faith of the Scarlet King, and then convey our made-up will of the Scarlet King. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Setaria for sure. She'll never guess that we had anything to do with it. So that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. अच्छा. Exactly. So, best of luck with Archon quest impersonating बढ़िया है. them. आर्कन क्वेस्ट बढ़िया है. ओके. इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे वाली लगी थी जो इनाजुमा की आर्कन क्वेस्ट थी.
उसमें थोड़े स्टेक्स थोड़े ज़्यादा थे और उसकी ना थोड़ी सी आर्कन क्वेस्ट थोड़ी सी टेंशन वाली भी थी। इसमें इतनी टेंशन नहीं हो रही, इसमें ऐसा लग रहा है सब कुछ मज़े मज़े में चल रहा है। Huh? Best of luck? But we don't know how to possess anyone. That's no problem at all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. Huh. That is pretty convenient. But why does he have to do this? Can't you do it yourself? मतलब इवन जब क्या कहते हैं ल्यूए की आर्कन क्वेस्ट स्टार्ट हुई थी, जो पहला चैप्टर था, उसमें भी कम से कम आदमी को टेंशन रहती थी कि जोंगली की डेथ का जो जिम्मेदार था हमें बता दिया था, है ना, तो मिलेट से भागते रहो इधर उधर, है ना, तो उसमें भी टेंशन थी। इनाजुमा वाले चैप्टर में और ज़्यादा थोड़े स्टेक्स हाई हो गए। इसमें अभी तक स्टेक्स कोई ऐसे हाई स्टेक्स आए नहीं है ना। मे भी हो सकता है बैकग्राउंड में स्टेक्स काफ़ी हाई हो, लेकिन अब तक हमें नहीं पता चला है कि क्यों जो सेजेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। मतलब आप लोगों को पता होगा क्योंकि आपने आगे गेम खेली हुई है, पर मैंने नहीं खेली तो मुझे नहीं पता। You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. If it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. But seeing how things are now, I probably should just accept it and push on. सेजेस बढ़ गए हैं। वो तो मुझे लग गया था पता, इतना तो पता लग गया था। जब उन्होंने सबज़ेरूस फेस्टिवल बंद करा दिया ना आके, मुझे तभी पता लग गया था। उसके बाद जो सारी ड्रीम वाली सीक्वेंस थी। Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon. Afternoon. Okay. AR 55 में इतने कम 5 स्टार। हाँ यार, मैंने ज़्यादा कहीं पुल किया नहीं, मेरी किस्मत ना थोड़ी ठीक नहीं रही है। जहाँ तक विशेष का मामले में ना मेरी किस्मत अच्छी नहीं रही है। मुझे बहुत कम 5 स्टार मिले, बहुत कम 5 स्टार। इनफैक्ट मेरे पास 5 स्टार वेपन भी सिर्फ एक है। सारे विशेष में मुझे या तो 4 स्टार मिलता था, और जो 5 स्टार आते थे वो एक एक दो 5 स्टार आ जाते थे। जैसे कि मेरे पास राइडन है, डीलुक है, कोकोमी है, योइमिया है ना, तो इस तरह के चीची है, चीची 1-2 बार आ जाती थी। तो ये इस तरह से 5 स्टार आते रहते थे, लेकिन कभी भी उनको ज़्यादा कुछ मिला नहीं। और मैं स्टोरी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता था, मैं ज़्यादा इतना उधर उधर देखता भी नहीं था। राइडन है, C0 राइडन फिर ना दिखाता हूँ। 5 स्टार मेरे पास हुताओ, एलॉय, ये तो खैर प्रसाद में मिली थी, और कोकोमी, राइडन, चीची, योइमिया और डीलुक। हुताओ बिल्ड क्यों नहीं की? क्योंकि हुताओ यार मेरी C0 थी, 0। हुताओ राइडन टॉप टियर DPS, हाँ ये तो मुझे पता है, पर एक्चुअली क्या था मैं तो बताता हूँ। मैं स्टार्टिंग जब से गेम मैंने स्टार्ट किया ना, रेज़र मेरा स्टार्टिंग से, ठीक है, तो मैं रेज़र को बिल्ड करने में लगा हुआ था। फिर उसके बाद जब मेरी रोज़ारिया की कॉन्स्टलेशंस ऑन होनी शुरू हुई, तो मुझे लगा यार रोज़ारिया जब कॉन्स्टलेशन ऑन हो रही है इसलिए DPS इसका भी अच्छा है, तो मैं इसको बिल्ड करने में लगा। फिर एक दिन किस्मत खुली, डीलुक आ गया, फिर मैं डीलुक को बिल्ड करने लगा। अब चक्कर ये है कि मैं अगर ज़्यादा फैलूँगा ना, हर कैरेक्टर को थोड़ा 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 बिल्ड करूँगा, तो किसी पे भी फोकस नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने डीलुक को अभी फ़िलहाल मैं डीलुक पे फोकस कर रहा हूँ,
ठीक है, डी लुक के बाद फिर मैं देखता हूँ कोई 5 स्टार ऐसा हो जिस पे फोकस कर सकूँ। हो सकता है चलो राइडन को मैं आगे बढ़ा कर सकता हूँ, है ना। राइडन को मैं अगर वो दे दूँ कैच मेरे पास है नहीं, है क्या? कैच है मेरे पास, है ना। अभी R1 है, मैंने ज़्यादा इसको किया नहीं कुछ, है ना। ट्राई टू बिल्ड राइडन, राइडन कर सकता हूँ। एक्चुअली इलेक्ट्रो वाले कैरेक्टर से ना मैं थोड़ा बोर आ गया हूँ मुझे एक फायर वाला और अब इस टाइम मुझे एक ना वाटर कैरेक्टर चाहिए, हाइड्रो कैरेक्टर चाहिए। मैं इस बैनर पे पुल करना चाह रहा हूँ नीलू के बैनर पे, पर मैं कर नहीं रहा। 5 स्टार वेपन कौन सा है? 5 स्टार वेपन मेरे पास सिर्फ एक है, ये। इसके अलावा 5 स्टार नहीं मेरे पास कोई, सिर्फ फुल फ्री ऑफ स्टोन। उसका सर्पेंट स्पाइन है, ये है, लग्जूरियस सी लॉर्ड है, स्नो टूम, स्टार सिल्वर बेल, फवोनियस ग्रेट सोर्ड, बस यही। अभी योइमिया तारतालिया आ रहे हैं, बोथ DPS। ग्रेव स्टोन और डी लुक, ग्रेव स्टोन मैंने डी लुक पे इसलिए नहीं रखी क्योंकि जो डी लुक के पास जो आर्टिफैक्ट है उनमें क्रिट रेट ज़्यादा नहीं है, तो मुझे डी लुक को क्रिट रेट देना था, तो मैंने इसलिए उसको सर्पेंट स्पाइन दे दी। इसमें मुझे क्रिट रेट मिल जाता है, इसलिए इसे मैंने डी लुक को सर्पेंट स्पाइन दे दी। मुझे अगर डी लुक के वो अच्छे मिल गए, क्या कहते हैं, आर्टिफैक्ट्स अच्छे मिल गए जिसमें क्रिट रेट या क्रिट डैमेज अच्छा आ गया मेरे पास अटैक के साथ और पायरो डैमेज के साथ, फिर मैं डी लुक को ग्रेव स्टोन दे दूँगा। Here she comes! Satori is here! Let's quietly follow her. When she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. D-Look badass है। D-Look तो है यार, D-Look the original DPS of Genshin Impact। I'm starting to feel kind of nervous. Okay, looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot and get started. और ऊपर से D-Look का जो भी नया स्किन आई है वो देखिए, फक क्या स्किन निकाली यार उन्होंने, मज़ा आ गया। पोनीटेल दे दिया D-Look को पर वही यार, पैसा खर्चो स्किन लो। आई हैव दैट कॉस्ट्यूम। किस्मत वाला भाई, बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो। That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Are you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? Okay then. You just seemed a little distraught. Strange. Your cats seem pretty worked up. Oh. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Amru and Tamru, Harut and Marut. Ah, I would love that's to be right. stepped on They're just little by darlings, Rosaria. aren't they? Harut and Marut. We all do. लेकिन जब से रोजारिया को थोड़ा सा नर्फ किया है ना उन्होंने, बहुत गलत कर दिया। So, which fortune do you want me to read for you today? You must have come for another echo of the divine voice of wisdom. I'd like to get another reading on my love वही तो। prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I hear you. No problem at all. The gods will reveal the truth. Sorry, your new laugh is just so hilarious. I couldn't help it. Please pay no mind to those kinds of details. ज़ोंगली का कैरेक्टर ट्रेलर अभी तक का बेस्ट है। ज़ोंगली अभी तक का बेस्ट है, मतलब कि राइडन तो फिर भी अब थोड़ी सी, जब से राइडन की स्टोरी आगे बढ़ी है ना, तो राइडन की फिर भी स्टोरी थोड़ी, अब राइडन थोड़ी सी मेलो लगने लगी है कि हाँ ठीक है, अपनी यार दोस्ती है। ज़ोंगली भी हमारे साथ स्टार्टिंग से फ्रेंडली रहा है, लेकिन ज़ोंगली में अभी भी ना वो अथॉरिटी वाली बात आती है। खासकर जो अभी शाओ की, जो हमने अभी स्टोरी क्वेस्ट नहीं की थी, पेरिल्स ऑफ द अंडर डेप्थ करके जो आई थी,
जोंगली के लिए हर प्रेजेंस के बाद जोंगली की थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है अंदर से। भाई बहुत पावरफुल है। सबसे पुराना आर्कॉन है तो ऑब्वियसली हो गई। The gods are asking, Sataria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? Big Daddy Zhongli, yes. Sataria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be truly upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all, the Scarlet King. The Scarlet King? No wonder he would make such a demand of me. Even though news of the Scarlet King's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. How can the Scarlet King still exist in real life? What insolence! I am the Scarlet King's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Do you? Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. See you. Wait! अब क्या हुआ? Oh, suspicious. Ooh, she just ran off in a hurry. She looked pretty upset. Well done. Sataria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. All I know are some abstract Haravatot theories. And in any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Sataria. Where are you from? Delhi NCR. NCR इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कभी दिल्ली कभी नोएडा आगे पीछे होता रहता हूँ. He's out of camp now. Right on cue. Let's get ready to possess him right away. It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Huh? Wasn't he nursing a leg injury? Oh, shit. If I recall correctly, his strong arms had always been his pride and joy. He sprained his arm a while back while trying to show off his strength. I thought you'd heard. अबिस रिसेट हो गया वैसे. यार मैं अबिस ज़्यादा करता नहीं हूँ, मुझे करना चाहिए. Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos? ये मैं भूल गया. Yeah, he's been retired there for a while. If you could find the time, please write him a letter. Please pass on that recently, faith in the Scarlet King has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. He has a quick temper and has always been a devout follower of the Danger Archon. I don't want him to get into a fight with those Scarlet King believers because of a difference in beliefs. Oh? So who are you siding with in all of this? The Academia or the Scarlet King? मैंने अबिस किया है, मतलब अबिस के अंदर मैं फाइट अप मैंने किया है, लेकिन ना मुझे इतना एक्साइटिंग नहीं लगा. हाँ मतलब रिवॉर्ड्स के लिए आपको करना है तो कर सकते हो, पर मुझे कभी इतना खास लगा नहीं. तो मैं घूम फिर के स्टोरीज और क्वेस्ट वगैरह पे आ जाता हूँ.
फिर जब मुझे लगता है ना कि यार मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, कि कुछ रिवॉर्ड्स आने चाहिए थे, फिर मैं ट्राई करता हूँ। I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray the Scarlet King, and now you spend all your time with those crooks from the academia. Akeem, you don't mean you've also become a believer of the Scarlet King? What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? Whoa! Paimon had no idea you'd be so good at this. You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming for Sataria, but once everything is over, I'll be sure to pay her a visit to her mind and explain everything. Anyway, let's keep going. किधर जाने का है? अच्छा, उसे फॉलो करना है क्या? Come on! Sataria's already started talking with Shishan. So, Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? Like, as if someone was trying to preach to you about something? Oh, right. Speaking of strange things, I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. That was really weird. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Shishan, don't tell me that you've converted to the Scarlet King as well. What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who works side by side with the Academia and treated people as nothing more than experimental subjects. हैंगआउट्स भी हो गए सारे। हैंगआउट्स मेरे अभी उसके हुए हैं, चोंगयून के हुए हैं, बेनेट के मैंने किए हैं और डायोना के थोड़े से किए हैं, बाकी कुछ रह गए हैं अभी। Please, please stop! Even now, Sataria is still trying to run from her problem. She can no longer justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guards! What should we do? This is the most important part of all. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha right away. Please, try to remain calm, miss. Tell me what's happening in the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. नोएल का हैंगआउट बड़ा क्यूट है। हाँ, नोएल का भी मैंने थोड़ा सा किया है। नोएल का तो हैंगआउट क्या है, वो तो ऐसा लगता है कि दोनों ट्रैवलर और नोएल दोनों डेट पे जा रहे हैं साथ में। Heretics? What kind of heresy are you talking about? The Scarlet King! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Sataria, nothing is impossible. You know my name? The Scarlet King is immortal, and all who defy him will one day pay the price. कुछ ज़्यादा ही strong हो गए। You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. गेंशिन की प्रॉब्लम पता है क्या है? जैसे कि नोवेल का हैंगआउट है, ऐसा लग रहा है कि दोनों साथ में डेट पे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आयाका है, आयाका को भी सबको पता है कि आयाका को ट्रैवलर के ऊपर क्रश है, ठीक है, लेकिन कभी भी ना आउटराइट रिलेशनशिप्स में नहीं जाते। इतने टाइम से गेम चल रही है कि अभी भी कोई ऐसा आउटराइट रिलेशनशिप नहीं दिखाया है कि दो कैरेक्टर हैं, प्लेएबल कैरेक्टर जो आपस में रिलेशनशिप के अंदर हैं, अब तक नहीं दिखाया। तो ये गेंशिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा इनको डैबल करना चाहिए कि ठीक है, हाँ यार डेट कर रहे हैं, किसी का कोई लव इंटरेस्ट है, किसी से शादी हो रही है ना, तो ये चीज़ की मुझे थोड़ी सी कमी लगी। ये होना चाहिए कि अगर आयाका को क्रश है, क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम उनको ये आती है, चाइनीज़ गेम है और चाइना के अंदर होमोसेक्सुअलिटी और ये सारी चीज़ें ना बैंड है एक तरीके से। तो अगर ईथर होता हमारा मेन कैरेक्टर तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो हैं लूमिन के साथ खेलते हैं, और आयाका भी उसी तरीके से क्या कहते हैं लूमिन के साथ रिएक्ट करती है जैसे वो ईथर के साथ करती है। तो वहाँ पे फिर वो आ जाती है बात कि यार ये तो दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं, तो ऐसे चलेगा नहीं।
तो इसलिए वो करते नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से इनको चेंज करना चाहिए। पर वही है यार, चाइना की कंपनी है, ठीक है, वो चाइना के डंडे के नीचे बैठी होती है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा इशू है। चाइना के अंदर कोई भी बाहर की मूवी आती है ना, उसमें अगर कोई भी होमोसेक्सुअलिटी का सीन होता है, उसको कट करना पड़ता है, तब वो मूवी रिलीज़ होती है वहाँ पे। ये चक्कर है। Child of the Scarlet King, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. Sataria, why haven't you gone home? और इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, होमोसेक्सुअलिटी नहीं है, वहाँ पे ब्लैक और वाइट का भी बड़ा पंगा है चाइना के अंदर। तभी बहुत ज़्यादा कैरेक्टर हमारे जो है डार्क स्किन नहीं है, शिनयान को छोड़ के अब तक कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं आया जो डार्क स्किन हो इस गेम में। जब स्टार वॉर्स की नई मूवी रिलीज़ हुई थी, उसमें जो कैरेक्टर है, ब्लैक कैरेक्टर है, वो मूवी के मेन पोस्टर पे था। जब वो मूवी चाइना में रिलीज़ हुई तो वहाँ से उसको बंदे को हटाई दिया उन्होंने पोस्टर के ऊपर से, तो बड़ा बैकलैश हुआ था। चाइना में इन चीज़ों का बड़ा पंगा है यार। गेम अच्छी है, काया जो है वो डार्क है, लेकिन काया जो है वो कहाँ से है? काया की बैक स्टोरी है कि काया वहाँ से है, क्या कहते हैं, खानरिया से, जो उसकी बैक स्टोरी है, जो अभी रिवील हो गया जाके काया जो है खानरिया का कोई लॉस्ट प्रिंस वगैरह है। और खानरिया के जितने भी कैरेक्टर्स थे, जो भी वहाँ के लोग हैं, वो सारे थोड़े डार्क स्किन है, कुछ उनमें से डार्क स्किन भी हैं, है ना। तो वहाँ पे चाइना के अंदर बहुत इशू है। ये गेम अगर यूएस वगैरह में बन रही होती ना, तो हो सकता है थोड़ा सा हमें कुछ देखने को मिलता, लेकिन जब तक नहीं होगा ना, हमें कुछ नहीं मिलेगा। कोई लव स्टोरी नहीं मिलेगी इस गेम में, कोई भी क्या कहते हैं गेज या लेस्बियन के कोई सीन नहीं मिलेंगे इस गेम के अंदर। डिया हॉट, हाँ यार वो तो है। It seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of the Scarlet King. I have to say, this is a familiar feeling. डिया का जो बनाया ना, जो उसका कैरेक्टर तो खैर नॉर्मल बाकी सारे फीमेल कैरेक्टर्स की तरह ही है, लेकिन उसके जो कपड़े बनाए हैं वो बहुत ही प्रोवोकेटिव बनाए हैं। I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? शेन है स्टिल द हॉटेस्ट। मुझे शेन से ज़्यादा वो लगती है हॉट, यूला। How do you know me so well? Are you truly just a believer of the Scarlet King? Or are you the god himself? That's not important. The important thing is to pass judgment on the academia and its sages, and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of atonement. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this wretched situation. Please tell me, what can I do for you? How much do you know about the sage's current activities? I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, which is what happened around the Sumeru's festival, but I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential documents. What are your documents. thoughts on the Harbingers? Harbingers, I think, is a very good addition to the game. ठीक है, अभी सारे हार्बिंजर्स तो हमने देखे नहीं है, जो लास्ट उनका ट्रेलर आया था उसमें थोड़े बहुत हार्बिंजर्स हमें नज़र आए, ठीक है, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस इस्टेब्लिश करने का जो उन्होंने काम किया ना, बहुत अच्छा किया है। बेसिकली वो जो ट्रेलर आया था हार्बिंजर्स वाला, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उन्होंने एकदम से ड्रॉप कर दिया, जिसके अंदर अपना उसका यार कौन थी वो बंदी जो भी लास्ट टाइम मरी, मैं नाम भूल गया उसका, ओ फक, मैं नाम कैसे भूल गया उसका, स्कारलेट विच ऑफ फ्लेम्स जो भी है, उसका भी वो हुआ क्या फ्यूनरल था, तो सारे उसमें थे, ठीक है। उसमें ये नहीं था अपना बॉलडियर, ठीक है, स्कारमूश वो नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली नोसिस लेके भागा हुआ है। लेकिन जो भी क्या कहते हैं इन्होंने हार्बिंजर्स बनाए हैं,
ठीक है, डिज़ाइन वाइज बहुत अच्छे हैं और पावर वाइज उनकी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने का इन्होंने अच्छा काम किया है ना। बार बार इन्होंने क्या कहते हैं ये इस्टेब्लिश किया गया ये हार्बिंजर कितने स्ट्रॉन्ग है और ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग हैं। हम तो खैर उनसे लड़ाई में जीत ही जाते हैं क्योंकि हम मेन कैरेक्टर हैं गेम के, लेकिन वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, अगर किसी ने वो मैंने गेंशिन की मांगा सारी नहीं पढ़ी, थोड़ी बहुत पढ़ी है, जिसके स्टार्टिंग में ही हार्बिंजर जो पहले वाला है आधे मास्क वाला वो भी है गेम के अंदर, और उसमें मांगा के अंदर उसका थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है। मांगा के अंदर थोड़ा सा कार्टूनी टाइप का लग रहा है, लेकिन गेम में उसका जो डिज़ाइन उन्होंने किया है ना बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंस उसकी स्ट्रॉन्ग है। और जो कैप्टन है जो फुल मास्क वाला है, सारे हार्बिंजर्स बैड ऐसे। हाँ, कुछ इतने पावरफुल नहीं है, कुछ इसलिए हार्बिंजर बने हुए हैं क्योंकि उनका सोसाइटी में स्ट्रक्चर बहुत ऊपर है ना, उनके अंदर पावर ज़्यादा नहीं है ना। जैसे कि तरतागलिया 11th हार्बिंजर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पावर में 11th नंबर पे है। I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still quite wary of him. My favorite is Tartaglia, he's a playboy. हो सकता है अगर मुझे किसी भी हार्बिंजर की स्टोरी ना पता हो, कि मुझे स्टोरी नहीं पता किसी की भी, और मैं सिर्फ अगर उनको ऐसे देखूं, तो मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा जो नंबर 2 का है, कैप्टन, जिसने फुल मास्क पहना हुआ है। ठीक है, और फिर नंबर 1 पे लगेगा पियारो। बाकी सारे तो ठीक है अनअज्यूमिंग से हैं थोड़े से, लेकिन जो नंबर 2 वाला है वो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग लगेगा। Okay, however, there is something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still quite wary of him. To fight against the academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned? उसका पूरा नाम है एल कैपितानो। ये 12 के 12 ना एक बहुत पुराना एक नॉवल है, प्ले है एक तरीके से। उसका नाम है डांटे जो है वो ऑथर थी, डिवाइन कॉमेडी। ये 12 के 12 कैरेक्टर जो हैं वहाँ से उठाए हैं इन्होंने, जो 12 हार्बिंजर्स है ये वहाँ से आए हैं। इवन पाइमॉन भी उस नॉवल में कैरेक्टर है, ऑल्दो उनका कुछ लेना देना नहीं, बस नाम उठाए हैं वहाँ से इन्होंने। It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see. Let's use the most primitive method. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the Academia entrance. ये धोखा देने वाली है क्या? हम वहाँ लेने जाएंगे और कोई The Academia entrance. Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. यही मैं सोच रहा हूँ। I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. All right, I trust you. So, if I were to that'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Sataria to our side. The Traveler's execution was ingenious. He's the one who deserves all the praise. रोज़लिन कितनी हॉट थी, RIP और हाँ, लेकिन उसका वैसे नाम क्या है? मैं उसका नाम क्यों भूल रहा हूँ बार बार? रोज़लिन तो उसका असली नाम है, उसका वैसे नाम क्या है यार? उसका हार्बिंजर नेम क्या है? सिनियोरा, हाँ सिनियोरा। Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do is pray for Sataria's mission to go off without a hitch. Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of wisdom and guardian of the scholars? राइडन डिलीट कर दी थी? ओ अच्छा, उसके अंदर मुझे लगा तुमने अपनी राइडन डिलीट कर दी गेम में से। दिल से बुरा लगा था भाई, दिल से बुरा लगा था। हाँ ये तो है, उसकी डेथ जो थी ना कुछ ज़्यादा ही पैथेटिक थी। सिनियोरा की डेथ कुछ ज़्यादा ही पैथेटिक थी, लेकिन राइडन की जो पावर थी ना वो इस्टेब्लिश करने के लिए सीन था कि एक कैरेक्टर जो हार्बिंजर है जिसको हमने इस्टेब्लिश किया हुआ कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको राइडन ने
एक में ही काट दिया। तो सोचो राइडन जब एक में काट सकती थी, जोंगली क्या कर सकता था सिन्योरा के साथ? वो तो उसका कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसने अपनी नोसिस उसको बड़े आसानी से दे दी। लेकिन अगर उसको सिन्योरा को लड़ना पड़ता जोंगली से, भाई साहब 6 फुट ज़मीन के नीचे काट देता। एंड देन काजुआ आता है, क्या मस्त था वो क्वेस्ट। वो भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लिटरली हाथ के रोंगटे खड़े हो गए थे वो सीन देख के। No. The truth is the true guardian of scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again tomorrow evening at the Adventurers Guild. हाँ भाई, तो जोंगली का कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसने अपना नोसिस अपना दे दिया आराम से। फॉलोइंग नाइट, अरे यार इसको वेट बड़ा करना पड़ता है। फॉलोइंग नाइट कंफर्म, वेट ऐड मी, हाँ मैं करता हूँ 1 मिनट। I still have a lot to do with the... भेज दे भाई। जोंगली राइडन, यार तुम्हारा तो एडवेंचर रेटिंग 60 है, मेरा भी हो जाता अगर मैं 6 महीने खेलना छोड़ता नहीं। Rest while I go back. Catherine, we're here! Oh, that's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Shh! We're on a secret... Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup tonight is just a trap. मुझे भी लग रहा है भाई ट्रैप है। If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. After all, the academia should still be unable to confirm the existence of my consciousness in the outside world. Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. Off? What do you feel is off? It's the middle of the night. Of course it's No, I think he's right. It really is a lot quieter than usual. यहाँ पे कुछ बवाल होने वाला है, मिर्जापुर स्टाइल। If you look around, there seems to be fewer people in the streets. I'm not sure if this is the case for the entire city, though. Huh. Maybe it's just a coincidence. Maybe Sataria figured out a way to not only distract the guards, but also to get everyone to go to sleep early, just so we can exchange the documents in peace. I also can't quite figure out why things feel a little off. But now that we're here, let's go ahead and meet her as we planned. Well, regardless, as long as you're here with us, Paimon feels a little safer. There really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the academia, and that Sataria managed to distract all the guards. मैंने तो छोड़ो, कोई भी नज़र नहीं आ रहा, ये पूरा सुमेरु खाली हो गया। कट सीन। ये क्या हो रहा है भाई? Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. Oh, fuck. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement.
With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. नाइस। ये सब इतना चीयर क्यों कर रहे हैं भाई? इनको क्या हो People गया? of Sumeru City. What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. Oh no, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. What? That guy's a Fatui Harbinger. We can't just leave you here. She's Nor an can they Archon. abandon the people of Sumeru. ए भाई एक मिनट, उस बंदी के साथ क्या हुआ जिसको हमें मिलना था यहाँ पे? उसको पकड़ लिया इन्होंने? मैंने ध्यान नहीं दिया। Don't worry. We'll meet again outside of the city. अच्छा, पकड़ लिया उसे। ओह, I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. she got caught. लेकिन यार ये जो डॉक्टर है, ये जब हमने ट्रेलर में देखा था तब तो ऐसा नहीं था। या ट्रेलर में था या नहीं था ये? था। This should be far enough. Paimon needs to catch her breath first. यार वैसे एक बात है, ये हार्बिंजर्स भले जितने मर्जी पावरफुल हो, इनको कम से कम ये तो समझना चाहिए ना कि तुम आर्कॉन के सामने हो, तो भाई तो वो गॉड है ना। यही गलती क्या सिनियोरा ने कर दी थी, उसको बेचारे को एक ही स्लैश में हटा दिया। कोई गॉड भले ही क्या कहते हैं कम पावरफुल हो चाहे ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है तो वो गॉड ही ना। तो मजाक है क्या? Is Nahida going to be okay? We only made it out because of her. Paimon wasn't counting on running into a new Harbinger here, let alone such a high-ranking one. That guy was number 2. So scary. सुनियोरा वेंटी को थप्पड़ मार के भाग गई थी। यार उसके पीछे ना स्टोरी है। अगर तुम इसकी स्टोरी पढ़ोगे, देखोगे ना गेंशिन इम्पैक्ट की, ठीक है, तो आर्कॉन वॉर के टाइम पे यहाँ पे जब सिनियोरा एक ह्यूमन थी, ठीक है, तो सिनियोरा का एक बॉयफ्रेंड था जो मॉन्स्टैट में रहता था। मॉन्स्टैट में वो बहुत मतलब नाइट था कोई, ठीक है। तो आर्कॉन वॉर के टाइम के ऊपर वेंटी को कहीं और जाना पड़ा था ड्यूरिन से लड़ने के लिए, इसके साथ जो अपना ड्रैगन है नीले वाला यार, उसके साथ जो है ड्यूरिन दूसरा ड्रैगन था, उसे लड़ने जाना पड़ा था। तो वो गया और पीछे से वॉर के अंदर इसका सिनियोरा का बॉयफ्रेंड मर गया। तो सिनियोरा ने उस टाइम से ही क्या कहते हैं एनिमो आर्कॉन को अपना दुश्मन मान लिया था, ठीक है। और वेंटी को भी बहुत बुरा लगा था कि वो उसको पर्सनली प्रोटेक्ट करता था उस बंदे को, और वो प्रेजेंट नहीं था तो वो बंदा मर गया। तो वेंटी को बुरा लगा था, इसलिए उसने सिनियोरा को थप्पड़ मारने दिया, वरना भाई आर्कॉन है वो ऐसे मार नहीं खाता, ठीक है। और ये कोई बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी स्टोरी चल रही है, उसने लेने दिया। जिस तरीके जोंगली ने दे दी ना अपनी नोसिस, उस तरह वेंटी ने भी दे दी थी अपनी नोसिस, ठीक है। तो इसी चक्कर में उसने सिनियोरा को उससे ज़्यादा लड़ाई नहीं की, क्योंकि उसको अंदर अंदर भी थोड़ा गिल्टी फील होता था कि इसका जो बॉयफ्रेंड था जिसके साथ इसे ज़िंदगी जीनी थी, उसको मैंने मरने दिया, मेरी वॉच के अंदर वो बंदा मर गया, ठीक है। और फिर सिनियोरा ने बेसिकली अपने आप को मार ही दिया था। फटुई ने सिनियोरा की बॉडी को दोबारा से ज़िंदा किया, ठीक है, वो बन गई थी क्रिम्सन विच ऑफ फ्लेम्स। और फटुई ने क्या किया, उसको एक क्रायो डिल्यूजन दे दिया कि जो क्रायो डिल्यूजन है उसके अंदर की आग को थोड़ा ठंडा रखेगा। इसलिए सिनियोरा के पास दो डिल्यूजन है, एक क्रायो है और एक फायर है। तो ये लंबी चौड़ी स्टोरी है। और फिर ऊपर से जो वो था अपना क्या कहते हैं वेंटी था, वेंटी बहुत टाइम से आर्कॉन था भी नहीं, वो जा चुका था, तो बहुत ज़्यादा लोग उसको प्रे नहीं कर रहे थे। और एक आर्कॉन अगर अपनी पोजीशन छोड़ दे तो उसकी पावर डाउन हो जाती है, ठीक है। तो वेंटी की पावर थोड़ी सी डाउन भी थी। तो दोनों रीज़न थे कि सिनियोरा ने इतनी आसानी से वेंटी को थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसका एक रीज़न था, इतनी आसानी से तुम किसी को वो नहीं कर सकते भाई, आर्कॉन है वो इसका संदीप शर्मा का वो देखा स्टैंड अप,
जज है वो, जबान से पोछा लगवाएगा, जबान से पोछा। भाई आर्कॉन है वो। सर उल्टा करके सर से झाड़ू मार देगा जमीन के ऊपर। He called himself the Doctor. Remember, Tainari told us about him. Sataria did say that someone who once got expelled from the academia came back recently. I didn't know that. हाँ मैं भी बता रहा हूँ ना, मैं तो गेंशिन की स्टोरी को और उसके लोर को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं ना इतने क्या कहते हैं, इतने मतलब कि इसमें नहीं पड़ता डोमेन्स के अंदर और ये अपने अबिस के अंदर इतना मैं जाता नहीं हूँ, स्पाइरल अबिस वगैरह में, क्योंकि मुझे ना स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि स्टोरी क्या चल रही है। And that even the sages are wary of him. Yep, sounds like she must have been talking about the Doctor. Yeah, now that the Doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the academia, they're in cahoots with the Fatui. लोग बोलते हैं वेंटी वीकेस्ट आर्कॉन। ऑब्वियसली वेंटी खुद कहता है कि मैं वीक हो गया हूँ इस चक्कर में, क्योंकि मैं अपनी पूजा नहीं करवाना चाहता और मैं चला गया यहाँ से, है ना, इस चक्कर में। But what are the Fatui after this time? Another Gnosis? Yeah, things would be a lot easier with Nahida's help. Nahida said we'll meet again outside of the city. But we can't just keep waiting around, right? You mean... Oh, right! Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with... Even though he turned it down at the time, he might still know something. There's no time to lose. Let's go to Gandharvaville. Oh bro, इतनी दूर? वो तो कैसे आ गई? Gaze from a certain chord. वे वर्ल्ड क्वेस्ट कहाँ से आ गई? इसमें तो मेन क्वेस्ट में। कुछ छोड़ा क्या? नहीं। Propagate! उधर थोड़ी जाना है, मैं तो इधर जाना है। बाय। Retribution! अबे ये कैसे रह गया? टाइम हो गया लड़े हुए। Hold it right there. Deya is also 5-star pyro. अच्छा, तो डेया भी रिलीज कहाँ हुई? वो तो भी आएगी ना? A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you all right. Take a look around. You've fallen right into our trap. Are you mercenaries from the Corps of 30? Corps of 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their work. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. 3.5 के अराउंड। हाँ, अभी तो टाइम लगेगा आने में से। The Outcast? An outcast? But why wouldn't the Doctor just send the Fatui after us? Still wasting time on idle chit-chat. Get him! आओ, लड़े। You're up, Trap! आओ दोस्त। आओ, मम्मी से लड़ो।
Burning this. Technique. Burn. Need. It isn't over yet! Here comes reinforcements! Time for retribution. Need. Judgment! Lights out. Terminate. गोल्डन एप्पल मैंने खेला था जब फर्स्ट टाइम आया था. अभी जब सेकंड टाइम आया वो वही टाइम था Mercenaries are like? जब मैं क्या कहते हैं खेल नहीं रहा था गेंशिन. तो जब फर्स्ट टाइम वाला आया था ना, जब क्ली का सारा एडवेंचर था फर्स्ट टाइम, गोल्डन एप्पल आर्कीपेलागो जब फर्स्ट टाइम था वो खेला था पूरा. Yeah, looks like, but this doctor guy seems like a pretty tough opponent. Going up against smart people is... ए डॉगी, यार इन कुत्तों को पेट करने का कोई वो होना चाहिए. अब तक पेटिंग मैकेनिज्म नहीं है इस गेम के अंदर. कॉली Second time वाला बहुत मस्त था. What are you two doing back here? डॉग से मीट मिलना चाइना गेम. हाँ ये तो है. Kale, it's nice to see you again. Are you doing all right? To be honest, I'm not doing too well. My hours, as a result, Master Tainari is taking me off the patrol schedule. Oh, Kale. Speaking of Tainari, did he go off on patrol? Oh, Master Tainari? You just left the Avidia forest a little... He left? What? Isn't Tainari always saying that he never wants to leave the Avidia forest? हाँ यार. He बड़ी even unfortunate turned down the बेचारी को Sage's इतनी बुरी invitation. बीमारी हो गई है. दुनियाजात जैसी. I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. He almost never leaves his post. No, I only found out that he left through a message he left behind. He also made sure to delegate all his tasks using a schedule. To leave in such a hurry? I'd guess he had something urgent to take care of. Master Tainari originally studied in the Amorta Darshan of the Academia, and Partis Di is something like the Amorta's research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. I know that before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a long time... A research base, huh? Gotta wonder what kind of... Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Partis Di. DI. Dihai. Don't worry, I'm fine. I'm used to... Got it. Will do. Catherine is busy completing the quest. Adventure takes courage. Catherine के पास थोड़ी जाना है. अबे यार पहले ये quest करनी पड़ेगी क्या? Adventure takes courage. चलो पहले ये करते हैं. यहाँ भी कुछ है. हाँ यही तो है. अरे तुम तो डॉक्टर से लड़ रही थी, यहाँ कैसे पहुँच गई?
सुमेरु कमीशंस अनलॉक हो गए इसके आगे। अरे सुमेरु के तो हो गए, मैंने तो अब तक इनाजुमा के पूरे नहीं किए, वो भी करने हैं। हो गया। ओके नेविगेट। पारदेश तिहाई बहुत दूर है, यहाँ जाना है। ओके तो यहाँ से चलते हैं, इसे अनलॉक करते हैं, फिर यहाँ से जाएंगे। ओके मुझे जाना है वहाँ पे, लेकिन पहले स्टैचू ऑफ 7 अनलॉक करना है मुझे। बाकी जो करेंगे बाद में। एरिया रिवील होगा ना, तो मैप सारा अंधेरे में पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे क्या है। म्यूज़िक अच्छा है यार सुमेरु का। म्यूज़िक के मामले में तो कंपनी को कोई फॉल्ट ही नहीं कर सकता है, क्या ज़बरदस्त म्यूज़िक बनाया है। स्पेशली पोर्ट ऑर्मस का म्यूज़िक देखा है, A1। हाँ I'm here. ज़बरदस्त म्यूज़िक है यार। Let's go, let's go. Ha, I'm here. यार ये क्या जुगाड़ है, मुझे ये समझ नहीं आया अब तक, ये क्या चीज़ है। ये तो कुछ वैसा सा लग रहा है जैसा इनाजुमा में नहीं था ट्रैवल करने के लिए जो होता है। आई गॉट टू गो, सी यू अराउंड ब्रो, थैंक यू फॉर हैंगिंग आउट। मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। हाँ क्या म्यूजिक है। उप्स, मुझ पे टेंडर लग गया। गैजेट मिलेगा, राना वर्ल्ड क्वेस्ट। ओके आरनारा क्वेस्ट को। यसना माउंटेन, अपम वुड्स, रूइंस ऑफ दारी, कैरावन रिबैथ। चलो अब चलते हैं इधर, और साथ ही इसे भी अनलॉक करते हैं। भाग गई। ओके ये बात सही है, मजा ही आ गया दोस्तों। So glittery. Control urge to pounce. क्या घर है। Ha, I'm here. अरे हियर तो ठीक है, जाना कहाँ है, उधर ऊपर जाने का।
Right here. रात भी हो गई है. Let's go, let's go. भारतीय स्थायी Scholars' उनसे lives बात seem to be करते pretty हुए. relaxed. 6-9 आवर का क्वेस्ट है, होते रहेगी. 6 से 9 घंटे का क्वेस्ट. आयरन आरा क्वेस्ट ना. हाँ, मैं करूँगा ज़रूर इसको. क्या दिया इसने? अरे हज़्म. चलो टाइनारी से मिलते हैं. ये क्या कर रही है यहाँ पे? सफिया. सुंदर. कैथरीन यहाँ पे खड़ी है. अच्छा, ये आ गई होगी ना इधर. Wait! Look who it is! Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. नीलू नीड्स दिस फ्लावर. मेरा तो यार देखो सिंपल सा है. मुझे रास्ते में जो मिलता मैं उठाता चलता हूँ. कब किसको ज़रूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं. अगर आपके रास्ते में कुछ आ रहा है तो ले लो. ऐसा तो है नहीं कि आपकी बैग की कोई लिमिट है कि कितने आप ले सकते हो कुछ. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human mind. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up, and that even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Yes. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. पार्ट 2 आर्कॉन क्वेस्ट इसके बाद. ये पार्ट 2 नहीं है. पार्ट 2 तो चल रहा है. अभी पार्ट 3 में आ गए. नहीं, पार्ट 3 तो वो है किंग दशरथ एंड 3 में जाए 3.1 वाला. पर वो तो पार्ट 3 है ना. ये पार्ट 2 है. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him. What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. पार्ट 3 है वो. हाँ, वही कर रहा हूँ. वो पार्ट 3 है. पार्ट 2 तो मैं खेल रहा हूँ. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside the Akasha. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the academia, so it's possible he already started. It
Feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with us and see what we can find? Okay, let's just hope we won't get him into trouble. ये कौन सा यहाँ पे द गेज फ्रॉम अ सर्टेन गॉड. अगर मैं इसमें आर्कन क्वेस्ट देखूँ जाके तो अब इस टाइम ये चल रहा है चैप्टर 3 एक्ट 3 ड्रीम्स. ड्रीम्स एम्प्टीनेस डिसेप्शन फिलहाल ये चल रहा है. इसके बाद ये दशरथन 3 में जाए और उसके बाद आएगा ट्रूथ अमंग्स द पेजेस ऑफ पुरानास. वेल यार अभी के लिए तो खैर इतना ही. अब इस गेम को मैं बाकी आगे की क्वेस्ट में करूँगा जब अगले दिन कल. बाकी क्वेस्ट होगी अब कल. अभी सिर्फ मैं इतना ही खेलूँगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है. धीरे धीरे मैं अपना स्ट्रीमिंग का टाइम थोड़ा सा बढ़ाऊँगा. अभी मैं क्या 1.5 से 2 घंटे स्ट्रीम करता हूँ. धीरे धीरे 3 घंटे मैं इसको बढ़ाऊँगा धीरे धीरे. और भी गेम्स इंट्रोड्यूस करूँगा. मैं वैलोरेंट भी खेलता हूँ, बाकी सारे गेम्स भी हैं, तो धीरे धीरे वो भी खेला करूँगा. मैं इनके डेज़ बनाऊँगा कि सर्टेन डेज़ वैलोरेंट खेली, फिर कुछ दिन गेंशिन पे आ गए. तो फ़िलहाल के लिए बाय. और कल मैं दोबारा स्ट्रीम करूँगा, तो प्लीज़ दोबारा से जो लोग यहाँ पे स्ट्रीम देख रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी ऑनलाइन आऊँ. इफ़ यू लाइक माई स्ट्रीम. तो बाकी आप लोगों से मैं कल मिलता हूँ. टेक केयर.